So hi guys, a very good morning to all of you. This is Rahul Prajapati and welcome to Morning Market Brief. So let's see, first of all we'll go with SGX, right? तो SGX में अगर हम देखें तो एक almost like 200 points का gap up है, 1% से ज्यादा का market is trading above 17,000 now. So earlier we were facing a resistance of 16,800. मार्केट ने इसके ऊपर क्लोज किया एंड वी कैन सी अभी मार्केट एक 200 पॉइंट के गैप अप के साथ ट्रेड कर रहा है एंड दैट्स अ वेरी गुड साइन. मार्केट ने ऑलमोस्ट 170 का हाई भी लगाया है, राइट? ओके, नाउ इफ यू गो टू द टेक्निकल चार्ट्स, निफ्टी सो टेक्निकल चार्ट्स में अगर हम देखें तो 16,800 का जो रेजिस्टेंस था मार्केट उसके ऊपर क्लोज हुआ है बहुत अच्छी तरीके से एंड अब यहाँ से अगर हम ऊपर की तरफ देखें तो यू कैन सी 17,200 से लेकर के 400 के बीच में मार्केट का एक रेजिस्टेंस बनता है एंड मार्केट हैव टू रीच देयर. और ऑसिलेटर से ट्रेंड देखें तो इट इज जस्ट इंडिकेटिंग दैट इट्स अ बुलिश साइन, राइट? ओके, सो एनी हाउ द ट्रेंड इज बुलिश और एनी डिप towards 16,800 could be a good buying opportunity now. Okay, तो यहाँ से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा हमको, राइट? ओके, अगर नीचे भी डिप लेता है तो वी हैव टू वेट, राइट? सेकेंड थिंग, अगर हम निफ्टी का ओआई देखें, सो निफ्टी का ओआई अगर हम सिंपली देखें तो इट वाज अ गुड लॉन्ग बिल्टअप अर्लियर. यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग का मूव भी है बट लॉन्ग्स भी है एंड देन आफ्टर अनवाइंडिंग अगेन अ गुड लॉन्ग बिल्टअप, राइट? ओके, कल के ट्रेडिंग सेशन में शॉर्ट कवरिंग का मूव था बिकॉज मोस्टली यू नो जो आप शिफ्टिंग हो रहा है बिकॉज ऑफ द एक्सपायरी, राइट? ओके, तो दैट्स व्हाई नाउ द ट्रेंड इज स्टिल इंटैक्ट एंड ट्रेंड इज स्टिल बुलिश. ओके, तो जो ओआई का बिल्टअप होगा वो 2 दिन में अपने हमको पता चलेगा कि व्हाट इज हैपनिंग बट स्टिल you can see the trend is bullish. Okay, okay, now 4th अगस्त एक्सपायरी के हिसाब से अगर हम मार्केट को देखें तो 17,000 इज द मेजर रेजिस्टेंस जो है भी दिख रहा है हमको. मार्केट के ऊपर ही खुलने वाला है तो probably you know we can see that 17,200 and 300 will become automatically the major resistance or probably 500, right? यहाँ पे भी इतना ज्यादा बिल्टअप नहीं हुआ है but yeah still good built up. Okay, now if market opens up तो 17,000 or 16,800 will become a good support for the market. So वहां पे जब भी पाएगा तो वी कैन गो फॉर लॉन्ग, राइट? ओके, सो दैट्स अ व्यू ऑन निफ्टी. ओके, सिंपली वी कैन गो एंड चेक बैंक निफ्टी आल्सो. ओके, सो बैंक निफ्टी का ट्रेंड काफी टाइम से बुलिश है एंड सिंपली यू कैन सी देयर वाज अ ब्रेकआउट आल्सो. यहाँ पर 36,500 के आसपास एक ब्रेकआउट भी दिया एंड कल के ट्रेडिंग सेशन में गैप अप के बाद सस्टेन भी किया मार्केट ने. सो ऑन द हायर साइड वी कैन सी 38,000 would be a resistance. Any dip towards 37,000 could be good buying opportunity from here. So Bank Nifty automatically bullish, right? It's not a very big deal. And if you see the OI structure of the Bank Nifty also, so ये तो जुलाई मंथ से ही बुलिश है. ओके, इसमें एक ही शॉट आया अभी तक तो हर डिप पे इसकी बाइंग अच्छी आई हुई है एंड सो द बैंक निफ्टी इज टोटली बुलिश, राइट? ओके, okay, now if we check the levels, so immediately so 37,000 is a good support now and on the higher side 38,000 will take, right? So technical charts पे भी वही दिख रहा है. So these 1,000 point range is good as of now. Okay, now let's talk about the, okay, so new month, new expiry starting. We can simply go and check the seasonality. We can go and check for Nifty specifically. Okay, तो निफ्टी का अगर हम जुलाई मंथ देखें तो दैट इज अगेन अ गुड मूव. ओके, सो जैसा हमने जुलाई मंथ के स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया था कि जुलाई मंथ इज मोस्टली पॉजिटिव फॉर निफ्टी एंड निफ्टी ने जुलाई मंथ में फिर 7.7 परसेंट का ऑलमोस्ट मूव दिया है इस मंथ में एंड दैट अगेन सीजनैलिटी कम इनटू पिक्चर. अगर हम अगस्त में भी देखें तो इट्स अ गुड मूव, राइट? ओके, सो यहाँ से अगले 4-5 मंथ मार्केट में मोस्टली बुलिश मूव ही रहता है. सो हिस्टोरिकली दैट हैज बीन वी कैन सी फ्रॉम हियर. सो थोड़ा सा बुलिश साइन हो सकता है यहाँ मार्केट में. ओके, सो लेट्स सी हाउ अगस्त बिहेव. अगस्त का रिटर्न इज अप्रोक्सीमेटली गुड. ऑन एन एवरेज इट इज 1.4, राइट? ओके, वी कैन चेक बैंक निफ्टी आल्सो. Okay, we'll go with
Okay, so August month itna acha nahi hai, but July month is again good for, and in this month it's almost gave a 11% return, right? Okay, so probably September and December, November seems to be good for Bank Nifty mostly, right? Okay. So we have to wait for again few months, right? Okay, but still the returns from here are for Bank Nifty is good, right? Okay. Fine. Let's quickly see for some other, the sectors also. So auto ancillaries seems to good, and capital goods not so good. Infra ignore, media ignore. Nifty stocks we have already seen. Realty is negative for August month mostly, right? FMCG is good, 2.7% return. So FMCG we can put the focus on FMCG stocks. IT is very good for 3%, almost 3% for August month. So we need to focus on IT stocks also. If they're bottoming out, we need to find them. August metal, okay, not so good. Auto again, you can see good move. Auto sectors providing a good move in August, right? Okay. Private banks not so good in this month. Telecom not so good. Oil better. NBFC okay. PSU banks negative. Pharma is not so good. Cement 2%, that is okay. Again, we can focus on these stocks, right? So FMCG I've seen good, seems to be good, right? Okay, and we back to zero, right? Okay, so few sectors you can go and check in seasonality, and you will get to know which sector is likely to perform. Okay, and historically you can get that return also. Okay. Fine. So let's come to the ban list also. So no stock in ban list as of now. Now let's come to the stocks to discuss. Two stocks will take. So we'll go with trap indicator first. So any good stock which is giving me a trade. Okay. So let's see 28. So we'll check only 28, right? Okay. So India Bulls Housing Finance. Okay, so we can go with first is negative. So Biocon, we can go with negative stock, Biocon and Indigo, right? Okay. So seems to be both stocks seems to be good. Okay. So I'll open Biocon here. So I'll open Indigo here. Okay, so if we see, yes, there's a breakdown happening in Biocon. So there was a good move yesterday. It almost crashed by 5%. So it is trading near the support level and probably with good time low. So further breakdown will take the stock to down. Okay, so let's see what's happening in this cycle. Biocon. Okay, we'll see Indigo also. That's clearly looked bearish as of now. So okay, just look this up. So trap indicator automatically gives you the signals for the negative side, right? Okay, so Biocon looks negative, and Indigo seems to be bullish here, right? Okay, so you can just simply go and make a trade because it's the starting of month. You have an ample number of time. Okay, even if you're just going with the simple naked options, just a holding period could be not more than a week, right? Okay, just a second. So we can simply go and check why. So for Indigo, it seems to be okay, not major shorts. Okay, so this looks bullish and it is giving a breakout. So 1850 could be the resistance and it give you breakout. Okay. So Indigo seems to be bullish. And for the next expiry, 1850 is the resistance. If that breaks, 1900 and 1950 could be the next expected level. 1800 could be good support for this. Okay. And if you go with Biocon, is a negative side. Okay. So it is trading near the highest put option. Okay. Near. Okay. So if that breaks, 310. Okay. If that breaks, 300 is the next target, and then probably 280, right? 280, 285
could be the next level. Okay, so that's why this looks weak, right? Okay, so 280 could be the next level. Okay, so anyhow, the stock seems to be weak. Trap indicator signal is again generating a negative sense. And if we check the OI for it, the last thing. Okay, so that's a good short yesterday. You can see that absolute change is very heavy. So that's good short. Okay, so any rise towards like 310 or 320 could be good selling opportunities. Okay, so the stock seems to be weak. Okay. Fine. So that's all. Just make sure you take trades properly. New expiry. We have a time. So we'll just see the all data build up again, and then we'll carefully take the trades again. Okay. So that's all. Thank you so much. I'll see you again in the next session. Bye and take care.